आज मैं टॉपिक बता दूं, फिर मैं ब्याडगी सर से कुछ निवेदन करूंगी। आज हमारे एकेडमी ऑफ रोग निदान के 70 लेक्चर जो है वो डॉक्टर प्रोफेसर मानस रंजन जी होता मधुमेह पर देंगे। और मधुमेह के संबंध में एक बात है, हमारे देश व प्रदेश में जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक संस्था है, रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, वो डायबिटीज व इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर व्यापक रूप से रिसर्च व स्टडी कर रही है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में देश के कुल डायबिटीज के रोगियों का 13% जो है वो अधिक है। पूरे देश में यदि हम देखें 2021 का आकलन, तो उसमें 8 करोड़ से अधिक मधुमेह के रोगी जो है वो हमको मिले। इसमें से 30 लाख रोगी अकेले छत्तीसगढ़ के हैं। यहाँ हम देखें तो टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ टाइप 1 के रोगियों की संख्या भी निरंतर जो है वो बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ इसमें ये देखा जा रहा है कि न केवल एडल्ट्स बल्कि इसमें बच्चे भी बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी थी और कोरोना की महामारी में अनेकों एलोपैथिक दवाइयों का लोगों ने जीवन रक्षा के लिए सेवन किया, लेकिन उसके पश्चात उसके उपद्रव के रूप में या उसके पश्चात जो इफेक्ट होते हैं उसमें डायबिटीज के स्थायी व अस्थायी रोगियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। कुछ तो स्थायी रोगी रहते हैं जिनको डायबिटीज जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा, कुछ अस्थायी रहते हैं जो चिकित्सा से जिनको लाभ मिल जाता है। पर अभी भी हम ये देख रहे हैं कि डायबिटीज मेलाइटस या आयुर्वेद में हम कहें तो हम उसको प्रमेय नहीं कह सकते। अभी उसके बारे में विशेष वर्णन जो है वो हमारे बॉस मानस रंजन होता देंगे। पर अनेक रोगियों में इस रोग को लेकर के बहुत भ्रमणाएं हैं। तो हमने जागरूकता के उद्देश्य से आज के इस विषय का चयन किया है। और आज जो हमारे विषय के विशेषज्ञ हैं उन्होंने विशेष रूप से एक प्रोजेक्ट in etiological study of प्रमेय with a special reference to diabetes mellitus, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में 2006 से लेकर 2009 पर उस पर काम किया है। तो विशेष रूप से इनका चयन जो है वो मधुमेह पर व्याख्यान के लिए किया गया है। अब मैं हमारे रोग एकेडमी ऑफ रोग निदान के ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे परमेश्वरप्पा एस ब्याडगी सर को आमंत्रित करती हूँ ताकि वो हमारी एकेडमी ऑफ रोग निदान जो है उसके बारे में संक्षिप्त जो है वो बताएं। और फिर मैं मानस रंजन होता प्रोफेसर सर का संक्षिप्त परिचय देकर के व्याख्यान की माला को आगे बढ़ाऊंगी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार मैडम, थैंक यू। आप सब लोग जानते हैं कि एक जरूरत थी कि रोग निदान की जितना भी विद्वान पूरे देश में अलग अलग विभिन्न भागों में एकत्रित है, तो उनको एक जगह पर लाने का जरूरत थी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए नागपुर में इसकी भूमिका बनाया गया है। और सब जानते हो कि नागपुर ऐसी जगह है कि वो संगे कलियुगी शक्ति के लिए रूप में जाना जाता है। तो इसलिए वो जो भी काम नागपुर से प्रारंभ होता है तो मैं समझता हूँ कि वो काम लंबे समय तक टिकता है और अच्छे तरह से उसकी नींव रखते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसको रोग निदान एकेडमी ऑफ रोग निदान को इनिशिएट किया गया। इसके साथ में इसके जो मूल उद्देश्य था कि सब लोग प्रोफेसर जीपी उपाध्याय सर थे, अभी हम लोग का जो प्रेसिडेंट है पवन कुमार गोदतवार सर है, और साथ में सेक्रेटरी जो है अतुल वासने जी है, और अन्य लोग जो रोग निदान एकेडमी ऑफ रोग निदान के जो जितना भी लोग हैं, तो इसमें जो सुचारू रूप से इसको ले जाने के आगे ले जाने के लिए जो प्रयास चल रही है, तो उद्देश्य बेसिकली यही था कि रोग निदान ऐसी एक सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा मतलब दुख की बात है, खुशी की बात है, हम लोग रोग निदानियन हैं, तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे थे। तो
इसमें एक समस्या हम लोग के साथ ये थी कि एमडी रोग निदान करने के बाद क्या उसको क्लिनिकल डायग्नोसिस भी हम लोग पढ़ाते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो कोई भी व्याधि को डायग्नोस करने के लिए 3 चीज का जरूरत है। एक हो गया आपका मेडिकल हिस्ट्री हो गई, दूसरा हो गया क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया, तीसरी कंपोनेंट हो गया लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का। तो इसमें क्या हो गया कि आयुर्वेद की रोग निदान सब्जेक्ट जो है मेडिकल हिस्ट्री भी कवर करता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कवर करता है इन द फॉर्म ऑफ क्लिनिकल मेथड्स, एंड तीसरी कंपोनेंट जो है एंसिलरी इन्वेस्टिगेशन वाला है। ये तीनों को मिला के हम लोग डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें एक हम लोग के साथ ये दिक्कत थी कि रोग निदान की विशेषज्ञ होने के बाद क्या उनके जो मान्यता को लेके क्या उनको क्या स्पेशलाइजेशन होगी, क्या उसको लैबोरेटरी खोलने की परमिशन मिल जाएगी। तो उसके उसी को लेके बहुत बड़ा पैमाने में उसकी डिस्कशंस होने लग गई। और लोगों को जो कंसर्न लोग हैं, जो ऑफिसर्स है, उनके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसकी चिट्ठी भी लिखी गई है। और उसी प्रयास के तहत तो हमने भी एक क्लिनिकल लैबोरेटरी मैनुअल का गठन किया। उसमें बहुत अच्छे से कंपाइल किया, आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को कंपाइल करके, ताकि हम लोग आयुर्वेदिक इन्वेस्टिगेशन को इंटरप्रेट कर सके। भैया रक्त परीक्षा है तो सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन के रक्त परीक्षा का जो वर्णन आयुर्वेद में है तो उसको हम लोग वैसा कर सकते हैं। तो उसी को बेस में मानते हुए हम लोग प्रयास अभी भी रोग निदान फोरम जो हम लोग का अकेडमी ऑफ रोग निदान से एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, ताकि लोगों में मान्यता मिल जाए कि लैबोरेटरी खोलने के लिए। तो यदि हम लोगों का रोग निदान की पीजीज को, रोग निदान के जो विशेषज्ञ रोग निदान विशारद जो भी है, तो उनको लैब की खोलने की परमिशन यदि मिल जाती है तो हम लोग की जो रोग निदान के स्पेशलिस्ट लोग हैं तो उनकी जो अच्छा तरह से जो प्रोफेशनल कोर्स का जो मतलब होता है कि भैया कोई भी स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन लेते हो, उसको स्पेशलाइजेशन में आपको आगे बढ़ के अच्छे से सुचारू रूप से आप रेस्पेक्टफुली कमाई भी कर सकते हो और आपके भविष्य भी अच्छा हो सकते हो। तो उसकी एक प्रयास में हमारे एक ये एकेडमी ऑफ रोग निदान बहुत बड़ा संघर्ष करके बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। एक पहलू ये था। दूसरी पहलू ये था कि हम लोग के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक क्या होते हैं, सौतेले व्यवहार होते आया है। तो जब चाहिए तो उस समय उसको ओपीडी दे देते, जब नहीं चाहिए तब उसको ओपीडी से हटा देते थे, या ओपीडी दे देते, कुछ जगह पर उसको नॉन क्लिनिकल बोल देते या पैरा क्लिनिकल बोल देते, या कई तरह का बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है इन इन रिलेशन टू द ओपीडीज रोग निदान को देना कि नहीं देना। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे जो अकेडमी ऑफ रोग निदान के तरफ से उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कलेक्ट करके, तो उसके लिए भी प्रयास चल रहा है कि रोग निदान सब्जेक्ट इज ए क्लिनिकल सब्जेक्ट। एंड इसके लिए सभी को अच्छा तरह से इसको ओपीडी मिलना चाहिए, एक्सपोजर हमारा पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स को, ताकि उन लोग का जो क्लिनिकल स्किल्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए, so that they can use their clinical skills for their practice, and they can earn good money out of their clinical knowledge what they have gained throughout the post graduation career. तो उसके लिए भी प्रयास किया गया। तो उसी प्रयास के एनसीआईएसएम में इस बार वो स्पेशलाइज्ड ओपीडी एंड आईपीडी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान के नाम से आया हुआ है। तो स्पेशलाइज्ड ओपीडी दिया जाए और ओपीडी आईपीडी भी रोग निदान सबको दिया जाए, इस तरह का प्रोविजन आया हुआ है। मगर एक चीज उसमें लिख दिया कि रोग निदान के नाम पे ओपीडी नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है। मगर आपको स्पेशलाइज्ड ओपीडी और ओपीडी आईपीडी के लिए भी ये एक अच्छा पहलू हुआ। मगर इसमें इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको एक जो ओपीडी वाला जो मेन ग्रुप है उसमें भी आ जाए। प्रयत्न करते करते हम लोग इधर तक आ गए, तो हम आशा करते हैं कि अगली बार भी जो भी निकलेगा थोड़ा सा गाइडलाइन, तो उसमें हम लोग ओपीडी का जो मेन स्ट्रीम है उसमें हम लोग का डिपार्टमेंट का नाम आ जाए। इसके साथ साथ में हम लोग का रोग निदान अकेडमी ऑफ रोग निदान एक प्रयास एक कर रहे हैं। तो एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप करना है, जैसे कि बेस्ट थीसिस अवार्ड के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में जो हर जगह पर हो रहा है रोग निदान में, तो उसका थीसिस का कंडक्ट कलेक्ट करके वैल्यूएट करके उसके लिए अलग से टीम गठित किया गया, तो उसके लिए भी काम प्रयास चल रहा है। दूसरी एक इस तरह का जो एकेडमिक इवेंट्स है, ऐसे कंपटीशन हो गया
या कुछ तरह का जो क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गई, तो उस तरह का जो ओवरऑल ये कि एक हमारा जो रोग निदान फोरम से आयुर्वेदिक अकेडमी ऑफ रोग निदान इज वन ऑफ दी प्रीमियर एसोसिएशन है। तो इसके तहत बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में जितना भी मैं अपील करूंगा, जो लोग रजिस्टर्ड किए हैं, मेंबरशिप लिए, अच्छी बात है, जो नहीं लिए है तो कृपया सब लोग मेंबरशिप ले ले। तो उसके बाद क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, ये सब संगठन से ही चलता है। संगठन मजबूत तब होता है जब अनेक लोग उसके जुड़ जाती है। तो जिम्मेदारी बांट के हम लोग अच्छे से और कार्यक्रम कर सकते हैं। 4 तारीख को हम लोग का जो रोग निदान अकेडमी ऑफ रोग निदान की जो नींव रखी गई थी, उसके तहत अभी कार्यक्रम हर संस्थाओं में किया गया है। तो आप लोग बैनर के तहत, इस रोग निदान अकेडमी ऑफ रोग निदान की बैनर के तहत आप स्वतंत्र रूप से सेमिनार भी कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि रोग निदान को ध्यान में रखते हुए रोग निदान की रोग निदान के सब्जेक्ट के अवेयरनेस के बारे में। तो ये हमारा अकेडमी ऑफ रोग निदान बहुत अच्छे से इसके प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रैक्टिशनर को हित को ध्यान में रखते हुए, चाहे एकेडमिक ध्यान में रखते हुए, और विद्यार्थियों को भी हित को ध्यान में रखते हुए अकेडमी ऑफ रोग निदान अपना प्रयास अच्छे से कर रहा है। मैं आशा करता हूँ ये आगे इस तरह का चीज, इसी कारण से बहुत सारे जो लेक्चर सीरीज अरेंज किया गया, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक थी, तो उसको बहुत सारे लोगों को समझाने थी, उस पॉइंट ऑफ को ध्यान में रखते हुए लेक्चर सीरीज को भी रखा गया। उस सिलसिले में अभी 17 लेक्चर सीरीज चल रही है, 17 लेक्चर है, आज की 70 है। तो उसमें आकर्षित कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप लोग सब साथ देंगे, तो और ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाते जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबरशिप जुड़ते जाए, तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़ते रहे। और इस शुभकामनाओं के साथ आज की जो वक्ता है प्रोफेसर रंजन होता जी जो है, आपके शायद पीएचडी का टॉपिक जो है मेरा ख्याल से ये मधुमेह रोगी का पर होगा। तो आयुर्वेद में भी इसके बारे में जो स्पष्ट रूप से जो भी वर्णन किया गया है, तो उसको आप सुचारू रूप से आज सबके सामने रखेंगे। तो इस शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर मानस रंजन होता सर को मैं इनवाइट करता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद सर ब्याडगी सर। आशा है आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है जी। और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मानस रंजन सर का देना चाहूंगी। उसको बंद कर दें। सर मानस रंजन होता सर ने यूजी जो है वो गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी से 2000 में किया है, और पीजी इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से 2006 में कंप्लीट किया। बड़ा करते हैं। 2013 में सर ने पीएचडी एनआईए राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से किया। 2019 से सर ने आयुर्वेद तंत्रण नाम से एक क्लिनिक जो है वो स्टार्ट किया है, और कंटिन्यू क्लिनिक कर रहे हैं। और वर्तमान में सर ने अनेक जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज जो वो भी किए हुए हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग की है इन पंचकर्मा में, इन योगा में। विशेष रूप से मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने एक डायबिटीज पर जो है एक प्रोजेक्ट पे काम किया है एनआईए में 2006 से 2009 तक, इटियोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्रमेय विथ स्पेशल रेफरेंस टू डायबिटीज मेलाइटस। सर का अध्ययन और अध्यापन में अभिरुचि है, अतः सर लेक्चरर रहे उत्तरांचल आयुर्वेद कॉलेज में। फिर उसके बाद वहां से वो टीबिया कॉलेज ऑफ दिल्ली आ गए एज ए लेक्चरर। फिर जूनागढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय में गवर्नमेंट कॉलेज में वो फिर वहां लेक्चरर के पद पर चले गए। फिर सर रीडर हुए अखंडानंद आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदाबाद शासकीय आयुर्वेद वहां से फिर सर ने छत्तीसगढ़ की ओर प्रस्थान किया, और सर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में रीडर के पद पर भी रहे। वर्तमान में इन्होंने सर जो है वो प्रिंसिपल और एचओडी हैं भारतीय आयुर्वेद महाविद्यालय दुर्ग में 2019 से प्रोफेसर, एचओडी व प्रिंसिपल के पद पर। सर की योग्यताएं केवल यहीं तक हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, सर ने विदेश में भी अपनी योग्यता का परचम लहराया है, और वो विजिटिंग प्रोफेसर हैं महिडोल यूनिवर्सिटी बैंकॉक और थाईलैंड में। सर ने अनेक पब्लिकेशन किए हैं, लगभग उनके 14 पब्लिकेशन जो हैं
वो प्रकाशित हुए हैं पीयर रिव्यू जर्नल्स में। इसके साथ ही अनेक साइंटिफिक पेपर, 28 साइंटिफिक पेपर जो है वो सर ने विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित किए हैं। सर अनेक स्थानों पर गेस्ट लेक्चर के रूप में जाते हैं, रेडियो टॉक किए, टीवी के साइंटिफिक पैनल में पैनलिस्ट के रूप में आते हैं। अतः ऑडियो विजुअल मेथड से भी सर जो है वो आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार जो है वो लगातार कर रहे हैं। अनेक वर्कशॉप जो है उन्होंने अपने महाविद्यालय में किए, साथ ही साथ रोग निदान के अनेक वर्कशॉप, सेमिनार व आरओटीपी जो है उनको भी, प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर प्रोफेसर मानस रंजन होता सर का आज एकेडमी ऑफ रोग निदान की व्याख्यान माला के 70वें व्याख्यान में आपका स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि अब हम समय व्यर्थ न करते हुए और आपको व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। मानस रंजन होता सर। धन्यवाद मैम फॉर ए नाइस इंट्रोडक्शन। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसुतान् अशेषान् औत्सुक्य मोह रतिदान जगान य पूर्व वैद्याय नमस्तु तस्मै। I would like to salute to the Apurva Vaidya, Parameshwar Paramatma, Bhagavan Dhanvantari. And also I would like to salute all my previous Vaidya, my teachers, my Guru, from whom I could learn something. And today I could make myself capable of speaking in front of all of you. Special acknowledgement for today's topic will be my Guru, recently under whom I am studying, Vaidya Hiten Bajaji. In the last lecture series, you all have witnessed his presentation. So I would like to thank today's coordinator, Ma'am Aradhana Ma'am, for considering me worthy for this lecture. Also, I would like to thank President Pavan Sir, Vice President, Secretary Atul Bashnesher, and today's Vice President, Dr. Vyadigi Sir. Dr. Ganesh Kholer is also one person to whom I should like to thank for his today's technical assistance. So with this, I would like to start my presentation. So my topic is Ayurvedic understanding of diabetes mellitus. In today's topic, I'd like to present my personal views and the understanding that I've got in my being a student of Ayurveda for so long. So let us discuss a little bit about diabetes mellitus first, the general knowledge that we have with the modern aspect. That is, diabetes mellitus is a chronic metabolic disease characterized by elevated level of blood sugar. So this is the mainstream which is necessary to be called to call a disease as diabetes mellitus. That is chronic elevated level of blood sugar. And this leads to many serious damage to the heart, blood vessels, eyes, kidneys, and nerve. These are the things that we know. In diabetes mellitus, two most important pathological events occurs. Number one is insulin resistance. Rather, it is called peripheral insulin resistance, which means that insulin cannot properly function and it becomes unable to carry the glucose inside the tissues. That is peripheral insulin resistance. And another cause is decreased secretion of insulin by the beta cells of Langerhans in the pancreas. So either one or combinedly these two pathological events occurs in diabetes mellitus. Then these two
under these two pathological events, many diseases are grouped. So in the bag, there are mainly 5 diseases in the group of diabetes mellitus, which ultimately leads to increased blood sugar level in the blood. About 80 to 90% of diabetes mellitus is called type 2 diabetes mellitus, in which peripheral insulin resistance is the principal cause. And usually it occurs in the adult people in the later stage of life. But when it occurs in the early stage of life, it is called MODY, M-O-D-Y, that is maturity onset diabetes of young. And also there is another kind of diabetes mellitus, that is gestational diabetes mellitus, that occurs in females, particularly in their gestational period. And also here this peripheral insulin resistance becomes the main pathological event. The second pathological event about which we discussed, that is decreased secretion of insulin by the beta cells of Langerhans in the pancreas. Usually it is autoimmune in nature, and it occurs in very early age. That's why it is also called juvenile diabetes mellitus or type 1 diabetes mellitus. But in recent years, it is observed that in later age also, this autoimmune kind of diabetes mellitus occurs in few people. So they grouped it in another group of disease and named it LADA. That is latent autoimmune diabetes mellitus of adult. So these 5 kinds of diseases are bagged under one group, that is diabetes mellitus. And मानस सर आपकी स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही हैं। नहीं, मैं स्लाइड ठीक है मैम, इसी स्लाइड्स पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ। It's fine, ma'am. Actually, there is no sites for all these descriptions, because these are from modern medicine. Okay. So there are these 5 kinds of diseases are grouped under the bag of diabetes mellitus, and they are they produce the investigational goal, actually the elevated level of blood sugar, and that is the diagnostic criteria to say someone suffering from diabetes mellitus. This increase in the blood sugar level is not the problem. The real problem occurs because of the complication, which leads over time to serious damages to the heart, blood vessels, eyes, kidneys, and nerves. So 2 kind of basic pathological events that occurs, that is non-enzymatic glycosylation, and another is polyol pathway mechanism. The increased glucose has a tendency to bind with protein of different body parts, and it occurs, they occlude the circulation and causes a number of microangiopathy, which later on leads to retinopathy and chronic kidney diseases. And with the help of this polyol pathway mechanism, other kinds of diseases of the nerves and hearts occurs. The complication is more dangerous in diabetes mellitus than the elevated blood glucose level. So chronic elevated blood glucose level leads to the production of these complications. Now let us see to few data. As Aradhana madam also said that in Chhattisgarh is also a state where diabetes mellitus is very prevalent. Diabetes was the 7th leading cause of death in 2016. Recently, in a publication, I was reading that in every 5 seconds, one person is dying due to the complication of diabetes mellitus. Every 5 seconds, someone is dying due to the complication of diabetes mellitus. So such a grave and disease is this.
The number of people with diabetes has risen from 108 million in 1980 to 422 million in 2014. The global prevalence of diabetes among adults over 18 years of age has risen from 4.7% in 1980 to 8.5% in 2014, and in 2022 it is around 10%. So we can see a gradual increase in the incidence or in the global prevalence of this monster disease. And up to which extent India is concerned, India is considered the diabetes capital of the world. Diabetes is a growing challenge in India with estimated 8.7% diabetic population in the age group of 20 to 70 years. In 2013, the prevalence of diabetes in India was 9.1%, whereas the world average was about 8.3%. It means we are leading in this also, in the prevalence of diabetes also. We are actually more than the world average. So that is really a very concern. That is really a great concern. Now my topic is Ayurvedic understanding of diabetes mellitus. So as very Aradhana ma'am suggested, gave you the information that in my PhD, my research topic was on diabetes mellitus. In my MD also, my thesis work was on diabetes mellitus. So I'm working with this disease since last about, I'm working on this, or I'm studying this, or I'm teaching this since 2003. So it is about 20 years I am studying this disease or treating the patients of this disease or reading about this. When we say diabetes mellitus, the second word comes madhumeh. Actually, diabetes mellitus is synonymous with madhumeh. This question was from the very beginning when I started working on this, that why diabetes mellitus is madhumeh. And many a time I have asked this question during my student period to many stalwarts of Ayurveda, my teachers. At some point I got some answer, at some point I could not. If we consider the word madhumeha, then we will see that it is one type of prameha among the 20. The Bhatik prameha, that is madhumeha. In madhumeha, in Charak Samhita Sutrasthan Kiyanta Shireshi Adhyaya, madhumeha term is used. And a detailed description of madhumeha is there. And we read that all kind of prameha ends in madhumeha. And in language, in linguistic way, this diabetes mellitus is translated into madhumeha. Bolchal ki bhasha mein. In the linguistic way, it is translated. When we say the translation of diabetes mellitus is madhumeha. Now we need to think how logical it is. It is. Is this true? Is this right to always compare when the madhumeha, or when diabetes mellitus comes? Is it always right to compare it with diabetes mellitus? With madhumeha? So today, actually, in the Ayurvedic understanding, I'm not going to translate the pathological events of diabetes mellitus into Ayurvedic language. I am a very medical student, and I have always, it was my problem to understand the basic things. So today I'm here in the Rog Nidan Academy because all the Rog Nidanis are here. So I am here to share my views and the views that I have learned from my teachers, that the basic, actually, when we start talking about diabetes mellitus, we start talking about prameha. Today, here in this lecture, I will share my view to justify, to see whether it is justified at all to mark all kind of diabetes mellitus as
Prameha in general or Madhumeha in particular. As per the critical judgment of most of the authors of recent era, diabetes mellitus is compared and correlated with Prameha in general and Madhumeha in particular. That is what we were discussing now. In present time, Prameha or Madhumeha treatment is administered in the case of type 2 diabetes mellitus with very limited success. This is what we are encountering. If the diabetes mellitus is Madhumeha or Prameha, then the treatment of Kaphaja Prameha, when we administer the treatment of Kaphaja Prameha, because Kaphaja Pramehas are considered sadhya, all diabetes mellitus, we should be capable of treating this all diabetes mellitus with the medicine of Kaphaja Prameha or with the help of the treatment principle of Kaphaja Prameha. But to the contrary, we are not seeing this. All or many Ayurvedic research projects are based on search of horrible hypoglycemic drugs. When research in diabetes research in Prameha is concerned, then searching from some kind of hypoglycemic drug is the motto. We see whether the drug that we are administering is capable of controlling the glucose. But the basic and fundamental principle of diagnosis in Ayurveda is based on presence of Pratyatma Linga. I think everyone will be unanimously, we can come to a point that while correlating a modern disease with some Ayurvedic disease, we should take care of this Pratyatma Linga or Samanya Lakshan. If it is same or similar at least, then only we should go for the comparison. Unless as until Pratyatma Linga of a particular disease is not observed in a patient, the patient cannot be said to be suffering from the particular disease. This is one area, this is the one area of problem. While correlating or while understanding a disease of modern system of medicine with Ayurvedic system. And secondly, one of the major problem in the correlation or understanding of the modern pathology is confusion in deciding different stages of Vikriti. We will deal it in the later slides. So what is the Samanya Lakshan or Pratyatma Linga of diabetes Prameha? It is Prabhuta Abila Mutrata. And in Sushrut, in Sushrut Samhita, we find that if Prabhuta Abila Mutrata along with the Purva Rupa are present, any of the Purva Rupa is present along with Prabhut Mutrata or Abila Mutrata, it can be considered as a patient of diabetes, patient of Prameha. This is what Sushruta says. We have this reference with us. So now the question is, do we find Prabhuta Abila Mutrata or the presence of this Purva Rupa in all cases of diabetes mellitus? We have n number of patients who are asymptomatic. And by accident, while going through laboratory investigation, they find that they are suffering from diabetes mellitus. In Ayurveda, can any disease be asymptomatic? Because the Ayurvedic literature that we refer is written in such a period where there was no scope of any kind of laboratory investigations. But they have very systematically, very scientifically, very in a very systemic way, they have described all the diseases. They have named it. So how can we name a disease of the modern era without any symptoms and compare it with the disease in our Ayurvedic literatures? Up to which extent Ayurveda is concerned, no Vikriti or no Vikar, no Rog or no Vyadhi can be asymptomatic. Without any symptom, we cannot name a disease.
there must be some symptom. It is another matter whether we consider in the recent time, in the modern time, we consider all those symptoms as symptoms or not. Heaviness in the abdomen, Udar Gaurav, Udar Daha, Udar Shul, Tiktamlodgar, Alasya, Tandra, Klum. All these symptoms are not considered a symptom so far as the modern medical terminologies are concerned. If they at all present, they consider it simple, they deal with simple proton pump inhibitors and simple anti-acidic agents with alkalines. But up to which extent Ayurveda is concerned, these small symptoms also helps us in diagnosing n number of diseases. And the second problem that I have started is there is a problem in understanding the stages of diseases up to which extent Ayurveda is concerned. In the previous class, Baja sir has described it in detail that every disease in Ayurveda has 3 stages. The primary stage is Vikar, second stage is the stage of Rog, and third stage is the stage of Vyadhi. Vikar means Vikaro Dhatu Vaishamyam, and here definitely Dhatu is not Sapta Dhatu or 13 Dhatu Pratan. Here when we say Dhatu Vaishamya means all the 24 Dhatus of Katidha Purushya. There is a Vaishamya in 24 Dhatu, and that is called Vikar, and that is the initial stage of any kind of disease. Now the second stage is Rog, that is Dosha Vaishamya, means the Dhatu, particularly the 3 Dhatus, Vayu, Pitta and Kapha, get Doshatva. Now they start Dhatu Vighatan, Dhatu Vibhanjan Prakriya, and neither they perform their own work properly, and now they start disturbing others by creating problem in other tissues. And that condition of Dhatu Vibhanjan is called Rog, and this is the second stage. And Vyadhi is the Dosha Dushya Shamurchana Janito Vyadhi, and Vyadhi is the final stage. And during the process of Vyadhi, Dosha Dushya Shamurchana occurs, and linear line of treatment will not work over there, and special Chikitsa Sutra is required to make the Samprapti Vighatan. So every pathological event passed through these 3 stages of Dhatu Vaishamya, Dosha Vaishamya, and Dosha Dushya Samurchana. In Charak Chikitsit, these Vyadhis are described, and this Dosha Dushya Samurchana can be categorized in 28 types, and broadly, that's why there are 28 kinds of diseases or Vyadhi in Charak Samhita Chikitsa Sthan. About Roga, this Dosha Vaishamya is described in our Samhitas in Anya Sthanas, and particularly this Vikar are described in Sutra Sthanas. So in my Guru Parampara and in my personal practice, when we see the patients of diabetes mellitus and see what are the symptoms they come to us, then we can categorize the Vikar Avastha, the initial stage, or the diabetic patients who comes to us with a recent history. We observe that they have the symptoms of Ajirna of Ayurveda. And Prabhuta Mutrata is often found over there. And many of them are asymptomatic according to allopathic science. But when we search for Ayurvedic symptoms, every time we get the symptoms of Ajirna. If we see and try to compare the Pratyatma Lakshan or the
cardinal features: drowsiness, tiredness, obesity, blurred vision, numbness, excessive thirst, mental confusion, mood swing, and leg cramps, which can be compared with the symptoms of ajirna like alasya, gaurava, brahma, sada, trat, moha, and shul. We'll discuss on detail on this. The roga avastha, that is the dhatu vibhanjan avastha. According to our observation, we found that the rakta pradoshaj vikar, under the heading of rakta pradoshaj vikar, the symptoms that we find are present in patients of diabetes mellitus, particularly raktameha, agni sadascha pipasa, gurugatrata, santapascha ati dorvalya, aruchi, klama, shvedah, sharira daurgandhya, madah, tandra, nidrati yogahascha, tamasahascha, atidarshanam, kandu, pidaka, vikaraha sarva, evaite vigyaya shunitashraya. So polydipsia, headache, that is sirasascha ruk, loss of strength, ati dorvalya, malaise, that is klamaha, marked irritability, that is krodha prachurata, buddhe, sammoho, drowsiness, that is tandra, nidrati yogaha, tamasascha, atidarshanam, and skin infections like kandu, kotha, pidaka, kushta, charmadala, adaya. And the vyadhi avastha, the patients with chronic history, they come, then there only we find the sign and symptoms of prameha. The 20 type of prameha is described. And if we see, many a type of prameha can be found in the clinical examination, can be diagnosed in the clinical examination. The pratyatma linga that we discussed, that we usually do not find in the patient of all kinds of patients of diabetes mellitus, but the patients in which we find this prabhuta avilamitrata, along with the presence of this purva rupa, jatili bhavam kesheshu, madhurya masyasya, karapadayoho, shuptata daho, these symptoms are found in a very minimal group of patients of diabetes mellitus, or particularly the patients of diabetes mellitus with a very chronic long history of about 10 years, 15 years, or at least more than 5 years. We find this pratyatma linga prameha, so we can diagnose them as madhumeha or prameha in general. In vikara avastha, that we know from our literature, that vikara occurs because of jatragni mandya. And this jatragni mandyata is responsible for the madhurya masya, mukhatalu kanthashosha, pipasha, alasya of prameha. There is also certain symptoms of dhatwagni mandya janya, that is jatili bhavam kesheshu, karapada dayo, suptata daho, vishram sarira gandha. And mahabhutavigni janya lakshan of vyadhi is paridaham suptata changesu, malam kaye, kaya chidresu padeha, shatpada pipelikascha bhischa, sariram mutra abhisharanam, mutrecha, mutradoshan, nidram, tandram cha sarva kalamiti. We can also classify which symptoms is because of jatragni mandya or vikarajanya, which symptom is dhatu vibhanjan janya, and which symptom is dosha samurchana janya, accordingly. Now we will discuss a bit about the vikara avastha. I will not give a detailed description on the vyadhi avastha, because in last 70 years we are discussing diabetes mellitus and prameha together in each and every event. That we know, we have discussed a lot. Here I'm here to describe the things of in between the line, where we are failing, that we have observed. And these are, whatever I am speaking over here is we are practicing in our clinical desk and getting exceptionally excellent results. So in the vikara avastha of ajirana, this is a disease of annavaha srotas. We know that the linga of annavaha srota vikriti are ananna vilhasha,
Arochaka, Abhipaka, and Chardi. Among these, this Ajirana carry forward the Abhipaka linga of Annavaha Shrotas. We need to understand this Abhipaka. And if we compare the pathological events, we can also correlate. But we usually try to avoid this because this modern pathological process are in a developing stage. Till today also, they say that they do not know the exact causative factor for diabetes mellitus. And every second day, some new things are being developed. So we will not go to that comparison, but if we like to do, then also we can do. Abhipaka. Paka means Sarakitta Vibhajana. If something other than Sarakitta is produced, then that is called Vipaka. Vishishta Paka, that is Vipaka. Paka means Sarakitta Vibhajana of Ahara is called Paka. Vipaka means if something other than, along with Sarakitta, if something other which is neither Sara, neither Kitta is produced, it is called Vipaka. And when this Vipaka is also not there, it is called Avipaka. It means along with Sara and Kitta, many other kinds of things are being produced. And Sara Kitta is also not produced properly. This linga is called Avipaka. And this Avipaka leads to Ajirana. Jiranata is a process in which one form is completely transformed into the next form. When Ahara is completely transformed into the Ahara Rasa, then it is called Jirana of Ahara. When Ahara Rasa is completely transported or converted into or placed in the Margastha Rasa, it is called Jirana of Ahara Rasa. So this Jaranita occurs in all levels, from the Amashaya and Pakvashaya to Margastha Rasa to Sthanastha Rasa, and from the Sthanastha Rasa to the Dhatu, and from the Dhatu to the Marmasti Sandhi. So when there is incomplete conversion, there is some problem in the conversion from one stage to the second stage, that condition is called Ajirana. And it occurs mainly in 4 ways. That is in Ama way, in Vistabdha way, in Vidagdha way, and in Rasasesa way. And the symptoms are Ajirananta Kafadamam, Tatra Sofa Akshigandayoho, Sadhya Bhukta Ibodgara, Praseka Alasya Gauravam. When the Annavaha Srotas does not function properly because of the impurities collected or produced from the Udakavaha Srotas, then it is called Amajirana. The causative factors, the Hetu will be of Udakavaha Srotas. Because of the causes of Udakavaha Srota Dusti, Udakavaha Srotas will be impaired and it will produce certain impurities. The impurities will go to the Annavaha Srotas and it will obstruct the physiological function of Annavaha Srotas and it will produce the Ajirana. This Ajirana is called Amajirana. And in this kind of Amajirana, the Lakshana like Sofa Gandakshikuta, Sadhya Bhukta Ibodgara, Praseka, Alasya, and Udara Gaurava will be produced. When, because of the Hetu Sevan of Pranavaha Srotas, Pranavaha Srota is vitiated and the impurities or mala produced by the Pranavaha Srotas, when it goes to the Annavaha Srotas and obstruct the physiological function of Annavaha Srotas and causes Ajirana, this Ajirana is called as Distabdha Jirana. And the symptoms will be Distabdham Anilat Shulam. There will be Udara Shula, Bivandha, Adbhana, and Shad. And when, because of
the hetu or etiological factor which is responsible vitiating annabha srotas is there, and it produce the mala in annabha srotas, and because of this mala, if annabha srotas function is disturbed and ajirna is produced, that ajirna is called vidagdha ajirna. And the symptom will be pittat vidagdham trut moha bhrama amlodgara dahavat. These are the slokas of Ashtanga Hridaya, Sutrasthan. So these are the symptoms of Ajirna Vikar Avastha. Now, these are the these slokas is from Susrut Samhita, that is Madhurya Mannam Gatamam Sangyam Vidagdha Sangyam Gatam Amla Bhavam Kinchit Vipakvam Vrusha Toda Shulam Distabdha Manabdha Viruddha Vatam Udgar Shuddha Vapi Bhakta Kanksha Najayate Hrud Guruta Cha Yasya Rasavasheshe Natu Sap Prasekam Chaturtham Etat Pravadanti Ajirnam. So Susrut Samhitakar describe about 4 types of Ajirna. And when it comes to Susrut Samhita, we can see some changes in the symptoms, because Susrut Samhita mainly deals with the Sakha and Marmasti Sandhi or the Sambayata. So when this Ajirna is not treated in the Vikara Avastha and it proceeds even more and start vitiating the Sakha and Marmasti Sandhi of the coaster, that is Amashaya and Pakwashaya, then the symptoms are produced, is described in Susrut Samhita. The 4th kind of Ajirna, that is Rasa Sesha Ajirna, is the Ajirna of Margastha Rasa. After the Pakakriya of Amashaya and Pakwashaya, the Ahara Rasa is transported into Margastha Rasa. We know that Rasa is of 2 types, that is Margastha Rasa and Sthanastha Rasa. This is clearly being mentioned in the Srotas Bhiman, sorry. And in Margastha Rasa, when it is not converted or not being jirna to the next level, that is Sthanastha Rasa, then it circulates in the Margastha Rasa and start n number of pathological events, occluding the Margastha Rasa. And that is called Rasa Sesha Jirna. And here there will be Guruta in Hridaya, and the Udgara will be Suddha. There will be no Udgara. The Udgara will not contain any taste or smell of the food, or there will be not, it will be not Amlodgara like in Vidagdha Jirna. The Udgara will be very clear, Suddha Udgara. But the patient will not be interested in taking food. There will be no Bhakta Kanksha. And there will be pain or heaviness in the heart, in the Hridaya Pradesh, particularly in the chest region. So this kind of condition is called Rasa Sesha Jirna. Now we will come and see the description of Ajirna in Charak Samhita Grahani Chikitsa. As we have discussed in the previous slide, that Charak Samhita Chikitsa Sthan mainly deals with the Vyadhi Avastha. So here, Ajirna Vyadhi condition can also be seen, and the symptoms that we will encounter in the Vyadhi Avastha of Ajirna is enlisted in the Charak Samhita Grahani Chikitsa. And it reads like Tasya Lingam Ajirnasya Bistambha Sadanam Tatha Siraso Rupcha Murchacha Brahma Prustakatigraha. These are very common problems we encounter in our daily, day-to-day OPD practice. Patient comes usually with all these problems and we fail to diagnose it properly. We start writing symptomatic treatments. Tasya Lingam Ajirnasya Bistambha Sadanam Tatha Siroso Ruk Cha Murchacha Brahma Prustakatigraha Jrumbha Angamarda Trishna Cha Jwaraha Chardi Pravahanam Arochaka Abhipakascha Ghoram Anna Visham Chatat Sansrujya Manam Pittena Daham Trishna Mukhamaya. Now the Annabisha produced because of Ajirna
If it get entangled with the pitta, then symptoms like daha, trishna, and mukharoga will be produced. Janaiti amla pittam cha pitta jansya aparan gadan. Along with amla pitta, this ajirna is capable of producing all kinds of pittaja roga. Yakshma pinasa mehadin kafajan kafasangatam. When this annavisha, amavisha produced this ajirna get entangled with the kapha, then it is capable of producing yakshma, pinasa, mehadin, kafasangatam. And I have no actually hesitation in saying that in my PhD thesis or MD thesis, I have not mentioned this sloka. Though I have worked for 6 years on Prameha, and here it is clearly mentioned that ajirana can lead to meha. This thing is not described in any of my theses. Yakshma, pinasa, mehadin, kafajan, kafasangatam. Very clearly, Maharshi Agnivesh, Maharshi Atreya mentioned that this annavisha, when entangled with kapha, it is capable of producing mehadin and other n number of kaphaja roga. Karoti bata sansrustam bata janscha gadan bahun mutra roganscha mutrastham kukshi rogan shakrut gatam rasade bhishcha sansrustam kuryad rogan rasadijan. So it is capable of producing all other kinds of diseases with which it get vitiated or with which it get entangled. That is, if with Bata it can produce all kinds of Bataja roga, with Mutra, Purisha and Shveda it can produce all the diseases of the Marmasti Sandhi, Kukshigata roga, and when it mixes with the Rasadi Dhatu, it can produce all the Pradosha Javikara, Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Asti and Majja and Shukra. Now we were discussing about the incidence of diabetes mellitus. Now, actually here we need to understand it, that how the machine, actually I consider this human system as a machine, and the most sophisticated machine ever evolved under the sun by the best architect of the all-time architect, best architect, how the Almighty can make some mistake so that 10% of the population will be suffering from one kind of disease. It means that our lifestyle or food habit have become such that everyone is susceptible for this particular pathological condition. And this ajirna is capable of producing all kinds of diseases under the sun. That's why it is mentioned roganikasya mulam ajirnam. And under this umbrella, diabetes mellitus definitely comes. And all other kinds of diseases in the primary stage, it usually starts with this ajirana. And the detailed description, the evidence is clearly mentioned in our Ayurvedic literatures. Murcha pralapa bamathu prashekam sadanam brahmaha upadrava bhavanti ete maranam chapi ajirnata. Ajirna has this kind of complications. Murcha, pralapa, bamathu, prasheka, shadanam, brahmaha. And we see all these symptoms in the patients of diabetes mellitus too, in the complicated stages. As I said, in Rogavastha, if we see the symptoms and try to match, we have already discussed it, that the words like Raktameha, Agnisada, Pipasa, Gurugatrata, Santapascha, Tidorbalyam, Aruchi, Klama, Shveda, Sharira Durgandhya, Madaha, Tandra, Nidra, Atiyoga, Tamasaha, Chatidarshanam, Kandu, Pidaka, all kinds of things, we have a similarity in the patients of diabetes mellitus. So now in Vyadhyavastha, we can correlate the patients, the pathological condition of diabetes mellitus with Prameha, definitely.
And here, as Prameha means Prakarshana, Prabhutam, Prachuram, Baram Baram Va Mehati, Mutratagam Karoti, Yasmin Rogesha Prameha. But the cardinal features, the patient should be producing, satisfying this criteria. When these criteria are there, then definitely we can diagnose the case of diabetes mellitus and Prameha, and later on, while treating, we can administer the treatment. I have taken, actually now whatever is in my slide, these are being discussed n number of times. I will not go in detail. These are the Prameha Nidan, the Tribhuta Vidya Sangraha of Prameha, that is Agni is Medagni, Jatragni, Doshar, Kapha, Pradhan, Pitta and Vayu. Dushya is Meda, Kleda, Ahara Rasa, Rasarakta Mamsa. Samata is Medagni Janya, Samta. Agni involved in Prameha are Medogni, Raktagni, Jatragni, Rasagni, and Mansagni. Srotas, the Swatantra Srotas are Medabha Srotas, and the Paratantra Srotas involved in Prameha are Annavaha Srotas, that is Amashaya and Bhamuparshva, Udakabha Srotas, Pranabha Srotas, Rasabha Srotas, Raktabha Srotas, and Mansabha Srotas. The Dosadhishthan are Amashaya Hridaya, Jivha Sandhi, Grahani Amashaya Hridaya, Grahani Hridaya Pakvashaya Nabhi, Nabhi Amashaya Shveda Lashika, Pakvashaya Kati, Klom Amashaya Rash and Med. Medasara, Shira Hridaya Basti are the Pranayatan which are involved. Rakta and Ojas and Adhoga Mahamula is involved in Prameha Roga. In the Vikalpa Samasti, it is because of Pachaka and Ranjaka Pitta, Saman, Apan, Byan and Udan Vayu are involved in the occurrence of Prameha disease. Kledaka and Abalambak Kapha is also involved, and it is Chirakali, and it get aggravated during Prataha Kal and in Varsha Ritu. Out of this Prameha, we know that the 10 Prameha of Kaphaja Prameha are Sadhya, Pittaja Prameha are Yapya, and Bataj Prameha are Asadhya. Actually, my intention of this lecture was just to show my view or the views that I have learned from my teachers, that we cannot take all the cases of diabetes mellitus into one umbrella of Prameha in general or Madhumeha in particular, because we lack evidence when we do so. So it is the need of the time, particularly we Nidanian should work on this, whether this correlating things is going on right or wrong, because Hetu and Linga are our responsibility of the Trisutra Ayurveda, and going to the base or searching in the base level is the need of the time. I'll be very happy if we can have some suggestion, comments, and questions on this. Thank you. Thank you very much. नमस्कार सर. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, थैंक यू मैम. जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं हमारे साथ एकेडमी ऑफ रोग निदान की भोपाल आयुर्वेदिक कॉलेज की रीडर डॉक्टर रीता सिंह जुड़ी हुई हैं. आभार प्रदर्शन के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ. डॉक्टर रीता सिंह. डॉक्टर रीता सिंह मैडम, आप मेरे को सुन पा रही? जी, आभार प्रदर्शन के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ मैडम. हाँ जी, आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है. आदरणीय पवन सर, आराधना मैडम, वार्ष्णेय सर, ब्याडगी सर,
एवं आज के अपने मुख्य वक्ता और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, पंडित कुशीलाल शर्मा, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य वक्ता वैद्य प्रोफेसर मानव रंजन होता सर का, जो कि प्रिंसिपल है भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में, का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर डायबिटीज मेलाइटिस जैसे ज्वलंत रोग के बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया और हेतु संप्राप्ति आदि के आधार पर बहुत ही हमारे लिए एक नया विजन दिया, जो कि वाजा सर के सानिध्य में हम लोगों ने भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है। और माय स्पेशल थैंक्स टू ऑल द होल एकेडमी ऑफ रोग निदान and all the eminent personalities of our academy, our president Pavan sir, vice president Aradhana madam, secretary Vashne sir and joint secretary Vyadgi sir, and for their valuable presence and always being motivating us. साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी सभी शिक्षक गणों का, वैद्यजनों का एवं छात्र छात्राओं का, जिन्होंने इस जूम मीटिंग में उपस्थित होकर इस व्याख्यान को सुना और अपने ज्ञान का वर्धन किया। अंत में मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद आराधना मैडम जी। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर रीता। और मैं पुनः डॉक्टर रीता के आभार व्यक्त करने के बाद भी मानस सर अपने आप को आभार व्यक्त करने से रोक नहीं पा रही हूँ। और आप सामने होते तो पुष्प गुच्छ से आपका आभार करती, लेकिन शब्द रूपी सुमन गुच्छ से मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपका जो 20 वर्षों का अध्यापन और अध्ययन का इस विषय में अनुभव, और उसके बाद हमारे आदरणीय माननीय गुरुदेव वाजा सर, हितेन भाई वाजा सर के द्वारा जो हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान को आपने जो आज सभी के सामने प्रसारित किया, जिसमें पाक और जीर्ण में अंतर, रोग विकार और व्याधि में अंतर, और मधुमेह को निश्चित रूप से अजीर्ण और रक्त प्रदोषित विकार के साथ जोड़ना निश्चित रूप से हमारे टीचर्स के लिए, हमारे वैद्यों के लिए, हमारे छात्रों के लिए अत्यंत लाभदायी होगा। और आपके साथ साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी एकेडमी ऑफ रोग निदान के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन गोटेटवार सर का, हमारे एकेडमी के सचिव एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय सर का, हमारे जो उपस्थित हैं अभी तक ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय डॉक्टर PS ब्याडगी सर का, और हमारी नीलम मैडम का, विवेक सर का, हमारे साथ उपस्थित है कामना सिंह, इन और हमारे प्रमुख आधार स्तंभ एकेडमी ऑफ रोग निदान के हमारे जो प्रमुख आधार स्तंभ हैं, हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड डॉक्टर गणेश जी और डॉक्टर प्रशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे स्टूडेंट्स को आभार जिन्होंने शांतिपूर्वक इसको सुना, और मैं चाहती हूँ कि उसको अपने अध्यापन और अध्ययन में जो है उसका निश्चित रूप से लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः आपको तकलीफ देना चाहेंगे, और फिर जब कभी आपकी आवश्यकता होगी पुनः व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद, आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। shall we conclude मैम नाउ? एक इसमें हमारा कहीं से प्रश्न आ रहा था, ये मैं बताती हूँ। हाउ रिकॉग्नाइज और हेलो मैम, बाद में देंगे। ठीक बात बोलिए। वो डायरेक्ट मानस सर से पूछ सकते हैं बाद में प्राइवेट हाँ, चैट या उसमें एकेडमी। जी सॉरी ड्यू टू प्रीवियस बिल्कुल हमने एबॉलिश किया है मैम। मेरा नंबर ब्याडगी सर नमस्कार, धन्यवाद आपको। आप सर चैट बॉक्स में सर आपका ये नमस्कार मैडम, नमस्कार डाल दीजिए। जी सर। और इस लेक्चर के संबंध में मैं, विवेक जी हमारे साथ उपस्थित हैं, वो भी हमारे गुरु भाई हैं, मानस सर भी हमारे गुरु भाई भी हैं और गुरु भी हैं, तो मैं 2 शब्द चाहूंगी कि विवेक जी जो है वो उनके लिए कहें। विवेक, डॉक्टर विवेक दुबे सर सुन रहे हैं मेरे को? डॉक्टर विवेक दुबे सर।
चलिए, वो नहीं है हमारे साथ। डॉक्टर सीमा पांडे मैडम हैं और डॉक्टर गुप्ता हैं, अशरफी गुप्ता जी। मैडम, एक मिनट, मैं 1 मिनट का समय लूंगी। कामना, अच्छा। हाँ, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आबिल मूत्रता कैसे जाने। जी, वही मैं बोली, पर हाँ, हाँ, एक लाइन में बता दीजिए सर, अगर आप उसके इच्छुक बाद हैं सर तो बता सकते हैं। ये एकदम डिपेंड्स शॉर्ट ऑन में बता स्पीकर। देता हूँ। देखिए, Yes, sir. उस समय जी। जबकि बात ये हो रही है, उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी और प्रभुत आबिल मूत्रता आचार्य कह रहे हैं, मतलब ये आबिलता नेकेड आई में एप्रिसिएबल होना चाहिए। तो आबिल मतलब गंदला, टर्बिड, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन सही शब्द टर्बिड होगा। गंदला या फिर गंदा या फिर टर्बिड, ऐसा टर्बिडिटी या फिर ऐसा गंदापन मूत्र का सामान्य मूत्र से वो अलग दिखेगा और गंदा दिखेगा, गंदला दिखेगा, जैसे कीचड़ उसमें मिला हुआ हो। और वो ऐसा मिला होना चाहिए कि हम नेकेड आई से उसको अप्रिशिएट कर सकें। क्योंकि आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि कोई माइक्रोस्कोप से देखेंगे और इसको समझेंगे। आचार्य कह रहे हैं कि प्रभुत आबिल मूत्रता, प्रभुत इन टू सेंस, इन फ्रीक्वेंसी एंड इन वॉल्यूम। प्रभुत मूत्रता एंड बारंबार मूत्रता में अंतर क्या है, ये अंबिका सर पूछ रहे हैं। प्रभुत में दोनों आ जाता है, बारंबार भी और अधिक मात्रा भी। वॉल्यूमिनस एंड इंक्रीज्ड इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन विल बी कंसीडर्ड एज प्रभुत। एंड आबिलता मींस ऐसी आबिलता, ऐसी टर्बिडिटी जो कि नेकेड आई से एप्रिशिएट हो सके, तभी जाकर के हम उस रोगी को प्रमेह के कैटेगरी में डालेंगे। थैंक यू सर। हाँ, मैंने मेरा नंबर भी डाल दिया है, इसमें किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं हम। थैंक यू सर। ओके। हेलो मैम, कंक्लूड कर ले इसको। हाँ, नमस्कार सर, धन्यवाद। आपने जो प्रश्न का जवाब दिया, मैं समझती हूँ हमारे ऑडियंस में जितने लोगों का ये प्रश्न था वो इससे संतुष्ट हुए होंगे। अन्य कोई प्रश्न होगा तो डॉक्टर मानस रंजन होता सर, प्राचार्य भारतीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उसमें जो है वो प्रश्न आप डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर मुझसे मिल जाएगा। और आपका ध्यान से ज्ञान अभिवर्धन के लिए पुनः सभी छात्रों का और जितने भी हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन किया उनका पुनः धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। नमस्कार। थैंक यू मैम। नमस्कार।